Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri ma'am. इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में जानेंगे. So these are the cells which can form from both the lineages during the hematopoiesis. माइलॉइड लीनिएज से भी डेंड्राइटिक सेल्स फॉर्म होते हैं और लिम्फॉइड लीनिएज से भी डेंड्राइटिक सेल्स फॉर्म होते हैं. इनका मेन फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी हेल्पर सेल्स. ये फैगोसाइटिक सेल्स है और फैगोसाइटोसिस करने के बाद दीज प्रेजेंट्स एंटीजन ऑन क्लास 2 MHC टू द टी हेल्पर सेल्स. इन सेल्स पर डेंड्राइट्स होते हैं, मतलब लॉन्ग एक्सटेंशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं. जैसे कि न्यूरॉन्स पे डेंड्राइट्स होते हैं, उसी तरह डेंड्राइटिक सेल्स पर भी लॉन्ग एक्सटेंशन, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक और मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस आर देयर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डेंड्राइटिक सेल्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स फॉर्म होते हैं. कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से लैंगरहैंस सेल्स, जो डेंड्राइटिक सेल्स है, वो फॉर्म होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन अ स्किन. सेकेंडली देयर आर इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स. मोनोसाइट से आगे चल के माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स आर फॉर्म्ड. सेकेंडली HSC हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल में कन्वर्ट होने के बाद इट फॉर्म्स द लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स. सो इस तरह से दोनों लीनिएज से डेंड्राइटिक सेल्स कैन बी फॉर्म्ड. So along with skin, dendritic cells are present in the inner linings of the nose, stomach, intestine and also in the inner lining of the lungs. इनके अलावा एक follicular dendritic cells होते हैं. So these are not synthesized during the hematopoiesis and these are not formed from the myeloid lineage or lymphoid lineage. So where these are formed? These are formed in a lymph node. Lymph node जो secondary lymphoid organ है, उसमें lymph follicle में ये follicular dendritic cells form होते हैं. इनका function होता है, it functions during the B cell responses. तो ये cells B cell response में काम करते हैं. इसकी वजह से इनके साथ class 2 MHC भी नहीं होता है. ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम नहीं करते हैं. These doesn't activate the T helper cell, but these are involved in the B cell responses. These are having a receptors for antibodies. तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बाद इनके साथ इंटरैक्शन जब हो जाती है तब B cell response enhance होता है. So we need to remember these follicular dendritic cell separately. So here I have completed with information about the dendritic cells. We will be continuing our lecture series further. Till then, don't forget to like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.